Hi, welcome everybody. My name is Sonia Choksi, and this is yet another episode of Flirting with the Fish. Thank you for joining us for the last so many episodes and really loving it. We are loving the journey, and our flirting with our fish is increasing by the day. As we keep on interacting with newer people, more dynamic people, we know that हमारे अलावा बहुत सारे लोग बहुत सारी मछलियों के साथ में बहुत अच्छे से फ्लर्ट कर रहे हैं और उनका पूरा जो इंटरेक्शन है और जो पूरा फ्लर्टिंग प्रोसेस है वो बहुत एडिक्टिव है, हम सबके लिए भी बहुत एडिक्टिव है. सो वेलकम एंड टुडे वी हैव अमित शुक्ला विद अस राइट हियर. अमित के बारे में बहुत कुछ पहले से इंट्रोड्यूस कर देना would be like killing the elephant before you really see it. So I will not do that. But मैं अमित को जानती हूँ. हमारा एक ब्रीफ इंटरेक्शन होता था NASSCOM 10 के स्टार्टअप में जहाँ पे हम दोनों साथ में थे. बट वो जो एक कल्चर होता है जब आप स्टार्टअप कल्चर के एकदम स्टार्टिंग टाइम पे होते हो ना, तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं और अपने अपने स्टार्टअप्स की के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहे होते हैं. तो हम मिलते भी हैं तो बहुत फॉर्मेलिटी के साथ मिलते हैं या अच्छा ठीक है फिर मिलेंगे, वो एक वक्त आएगा फिर मिलेंगे फिर बैठेंगे, वैसे वाली फीलिंग के साथ मिलते हैं. और ऐसे ही किसी टाइम पे मैं और अमित मिले थे. सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, बट थैंक्स टू दिस पॉडकास्ट दैट वी डूइंग दैट आई हैव एक्चुअली गॉटन टू नो अमित एंड हिज विजन and his past and his future. And because I am deeply touched by who he is and how he operates and how he makes his choices and what are his processes, I really thought I want to share it with all of you here. So let me bring Amit Shukla. He's the founder and CEO of EasyGov. What is EasyGov? Why is he into EasyGov? I think ये information तो आपको बहुत जगह इंटरनेट पे भी मिल ही जाएगी thanks to the amount of information around. Let's focus on knowing this amazing person. Hi Amit, welcome to our podcast. Thank you, Sonia. I'm also looking forward for this, especially from a GovTech point of view. If I'm able to motivate, encourage few people else to take up the challenge of GovTech, that will be of really help. I know, but GovTech तो इतना बड़ा आपका मिशन है जो आपने एक सिंगल हैंडेडली किसी किसी तरह से शुरू किया था. एंड आई थिंक ये तो एक अगेन दिस इज अनदर एडिक्शन जो आप बना रहे हो, यू नो, लाइक कि अगर आपने यहाँ तक नहीं पहुँचे होते तो फिर शायद बहुत और थोड़ा दूर चला जाता लोगों के लिए अवेयरनेस भी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गवर्नेंस विद टेक्नोलॉजी, राइट? तो हम इस बारे में तो डेफिनेटली वी वांट टू नो मोर. बट on a personal side, and because I feel कि personal और professional बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो हम एज अ पर्सन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे चॉइसेस ऑफ प्रोफेशन में रिफ्लेक्ट करता है एंड द वाइस वर्सा. सो क्वेश्चन ये था कि आपने अभी तक कितने एड्रेसेस बदले हैं अपनी ज़िंदगी में? Oh, that's so let me start. So I born in Allahabad, and then from there, the first location was Almora. From there, I did primary. Then Agra, where I did a couple of classes. Then Lalitpur, again 2-3 classes. And then in class 7th, I got a stable in Lucknow. There I lived around for 5 years till 12th. Then I moved to Delhi. Then I moved to Jhansi for my BTech. Then I moved back to Noida for my MBA. And after my MBA, it was crazy. I can't tell you after that, right? It was like the first assignment was in Khandwa in Madhya Pradesh, then to Visakhapatnam in Andhra Pradesh, then Rohtak in Haryana. Then after that, I got into Wipro. My first assignment was in Jaipur in Rajasthan for 7-8 months. Then I moved to Uttar Pradesh. There I lived in Sitapur and Lucknow. Then from there I moved to MPA district. Initially 2 months in Indore, then a couple of months in Bhopal, then few months in Shivpuri, and from there I got into the another assignment that was in Hyderabad in Andhra Pradesh. After that I moved to the Panchayati Raj institution. There I was in Patna and Gaya. From there I went to Nagaland, Kohima. After Nagaland, Kohima, I was back. Then I did one assignment in Delhi itself. That was Ministry of Corporate Affairs. Then I did another one that was in Delhi. Yeah.
After that, I moved to Saudi Arabia, Riyadh, and from Riyadh to Sydney, Australia, then to Tokyo, Japan, and these travel keep on happening. And then yeah, so these were my work locations, you can say. And then back to India, and since India, I'm working in Bangalore, in Chandigarh, because all these places are something is happening that deep we are doing. If you ask number of cities I've been to, each and every state capital of India I've been to for sure, and yeah, so So that's a I was trying to keep a pace while you were going through this, and I think 25 तो मैंने गिन पाई मैं मेरी उंगली पे, और ये वो जगह है जहाँ पे आप रहे हैं, correct, जहाँ पे आपने 6 महीने से ज्यादा का वक्त बिताया है। correct, तो correct. 25 तो ये हो गई, और बाकी जैसे कि आपने बोला कि आप हर एक स्टेट में गए हो, और जिस देशों में भी आप सिडनी में रहे हो, सऊदी अरेबिया में रहे हो, तो वहां पे भी। इंडियन सिटी में तो फिर दुबई भी है, शिकागो भी हाँ। है, हम्म। सिंगापुर भी है, फिर देन इट्स डू नॉट नो, तो राइट। कतार भी है, दोहा भी है, पता नहीं। हाँ, वो फिर उस कंट्री में और फिर बढ़ ही जाते हैं। सो करेक्ट। मिनिमम जो कि बहुत बहुत स्टेटिस्टिकली आपने गिना दिया, वो 25 हो गए, और 25 से 50 के बीच में तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, वेरी वेरी करेक्ट, इजीली, राइट? करेक्ट। एंड हाउ ओल्ड आर यू, अमित? आई एम 40, जस्ट ओके, बी 40 इन दिसंबर। right. So at the beginning of 40, the gentleman has crossed destinations, living destinations of more than 30, 35, right? Which averages to sometimes less than a year of a travel. You know, एक साल में आप दो जगह पे भी रहे होंगे, 2 साल एक जगह पे रहे होंगे, Yeah, है ना? I worked in 3 time zone. 3 time zones, राइट? सो आई थिंक जो बचपन वाला फेज है, वो तो जैसे सब कुछ पेरेंट्स पे डिफाइन होता है, और Correct, आपके लाइक जैसा फैमिली का स्ट्रक्चर बन जाता है, correct. उस पे हो जाता है। सो So आई my कैन। dad was in a transferable job. So initially it was wherever he got getting transferred, we were moving along with him. But he decided to be in a transferable job, but keep us in Lucknow. So that's why 5 years in Lucknow. Otherwise, I would have changed 3 more places. राइट। Mm. सो पहले तो फादर की ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से आपका मूवमेंट हुआ, बाद में क्यों, मतलब क्या इतना क्यों आपको चेंज करना पड़ा? आपको लोग पसंद नहीं आते थे जहाँ पे थे, जगह पसंद नहीं आती थी, सिचुएशन पसंद नहीं आती थी, या ये आपके कंट्रोल के बाहर की चीज थी? Control के बाहर की चीज थी, I would say, because I was in consulting. Consulting assignment are usually, if they are not the program management, they don't last more than 6 months. Right? Some assignment even will be off for 3 months, right? But getting assigned consulting assignment for 6 to 9 months is the best you can get, unless you're not into program management or in a delivery IT delivery project where you are doing a program management as a consultant. Then it is a long term. So you can say that. But another thing is, I never disliked travel. I used to love travel, going to the new places. So it's not like that. Even today, if I have to travel, it's not I get the feeling that oh, travel karna padega. In fact, if I don't travel, I get little bit wound up that what is happening in my life. कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, so I need to be on road. ऑन रोड। बट ये इतना सारा जो आपने ट्रैवल किया, बट आप हैं कौन से प्रदेश से? As I've told you, birthplace was Allahabad. And सो उत्तर Uttar प्रदेश। Pradesh, and schooling is also in Lucknow. My parents are there also in Lucknow, so you can say Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी बात है जो कि आप ये इतनी जो जगह पे रहे हैं, आप किसी के साथ भी ट्रेड ऑफ नहीं करेंगे? Uttar Pradesh food, हम्म। right? So if I'm vegetarian, but people will think that what is there in Lucknow for vegetarian, but there is a lot. हाँ। So yeah, so food is one thing. Then the old circle that is there in Lucknow, still whenever we go, those feelings. So those are the, I think, and there is an attachment. The way you attach to your country, the same way you attach to your state. Whenever it comes like that, I have to do something for Uttar Pradesh. There is always some more push from inside that okay, now it's time. So I can be easily negotiable if something is happening in Uttar Pradesh. So there is a nostalgia, and there is a deeper connect because it is a state that you belong to. Correct. और खाने की बात तो आपने मेंशन कर ही दी।
Hmm. है ना? सो नॉस्टैल्जिया तो हर एक का अपना-अपना होता है, जो जहाँ से होता है वहाँ पे। बट आई थिंक जो जो आंसर करा अमित ने, वो कि किस चीज़ को ट्रेड ऑफ नहीं करेंगे, जबकि चप्पे-चप्पे का पे रह चुके हैं, घाट-घाट का पानी पी चुके हैं, और वो है यूपी का खाना। सो Right. दैट इज़ एन ओपन इन्विटेशन टू एवरीबॉडी जिसने यूपी का खाना नहीं खाया, वेजिटेरियन नहीं खाया है, आई थिंक अमित विल बी द राइट पर्सन टू कनेक्ट विद। Yeah, there is a lot लव इट। to explore. सो अमित, आई आपने इतनी सारी जो चीज़ें करी एंड you're only 40 years old. So, sticking to the topic of our conversation here in the podcast, what are those fishes that Hmm. you have been chasing? And by fishes, what we mean here is कि वो मिशन क्या है, वो विजन क्या है, वो आइडिया क्या है, वो पैशन क्या है, कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं, एक या कई, जिनके पीछे आप पड़े हुए हैं? और मछली कैसी होती है ना, कि पकड़ना तो हम सब चाहते हैं मछली को, लेकिन ज़रूरी नहीं कि पकड़ पाते हैं, है ना? Agree. आते-आते हाथ से छूट जाती है ना? तो यहाँ पे हम उन फिशेस की बात कर रहे हैं आपके लाइफ की, जिनके साथ जिनके आप पीछे पड़े हुए हैं, एंड ऑब्वियसली आप पीछे पड़े हुए बड़ा परेशान नहीं है। इट इज़ दैट होल पैशन, दैट होल फीलिंग ऑफ फ्लर्टिंग, जिसमें कि जो फ्लर्ट कर रहा होता है वो तो एंजॉय कर रहा होता है, बाकी किसी का पता Right. नहीं। है ना? And सो ये क्या है? and that's a kind of a good way to put it, like flirting with fish, because it covers a lot of things. Those are there. So Yeah. let me talk about my fishes. So I've been always passionate about this e-governance, but initially I was confused, or you can say I was exploring that what is e-governance. But one thing was clear, that people at the grassroots level, when I say grassroots, especially I'm talking about in economically weaker section, or the communities like farmers, livelihood earners living in the villages. What good I can do for them, and I didn't know that the connection is that strong. I was trying to solve it through e-governance, and I thought initially that e-governance is all about that. But when I explored, and I found that the e-governance that is now named as GovTech has 18 different vertical, and I can't focus on each one of them, though I had a good exposure of working at least two of them deeply. One was public safety, that includes terrorism. So I was there in 2 years for National Intelligence Grid, the initiative of Ministry of Home Affairs. I was part of the founding team. Our job was to design a system so that we can predict Mumbai kind of attack, 2611 kind of attack beforehand. Oh wow. So using IT, using AI. So that was on. In fact, Japan also. The project I did was on a cyber crime only, that how to combat the cyber crime. And that time, because from 18 I narrowed down to two. Hmm. It was between public safety and the another one that is my favorite, where I am, is called social protection. Social protection is pensions, scholarships, housing schemes, food, your PDS system whole. So whatever people need to survival, people need just three four things for the survival. Okay, Huh. so it's like health, housing, education, food, and livelihood. Hmm. That's a missing piece usually. Now with the Atmanirbhar Bharat, we Yeah. start talking about a little bit more about livelihood. Yeah. Atmanirbhar Bharat is all about livelihood. Then I realized that this is a complex problem, Hmm. and in many bigger problem, including the policing, including the crime, the root cause is economic divide. The root Hmm. cause is some people are getting a lot, some people are getting nothing. Yeah. How to bridge that gap? And the one thought that stick to my head when I was in the public safety assignment, that if you are trying to solve a terrorism problem, try to understand the people who are doing a act like Nirbhaya in Delhi. Hmm. You have to read their life. It's, yeah, they did a wrong thing, they were the criminal, but you Yeah. have to read their life, that how the whole social protection cover was not there. Hmm. We should punish them, but at the same time, are we stopping those people to be created again in the society, Yes. right? So if we know that there is a one hotbed from where the maximum supporter to the terrorism activities are getting made, Hmm. are we doing something in that locality so that the supporters don't dare to support terrorist attack? Yes. So how to generate, and that I think I found a connection between social protection, and I Hmm. thought that no, I think uh,
social protection is not about giving someone a lavish life. I'm against that, by the way. Right? People should earn. People should do. People should make their own social protection through livelihood, not with the taxpayer money. Yes. But how to take them to that path? And that is was, you can say in one line, my fish or the vision of EasyGov, to make social protection family centric and progressive. Progressive for the people, progressive for the economy, and progressive for the country. If we do that, we solve so many associated problems that we can't even think of. Absolutely. Totally with you on that. So, social protection is that fish that you've been chasing, right? पर जैसे कि हमने बात करा कि ये वो फिश की हम बात कर रहे हैं जिसमें आप तो फ्लर्ट कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत इजीली आपके रास्ते आ ही गई होंगी, तभी तो ये मछली है जो कि हाथ से छूट जाती है. सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट कि इस फिश को पकड़ना कब कब आपके हाथ से छूटी है, कैसे कैसे छूटी है, या कुछ जो आपके सबसे बड़े चैलेंजेस रहे हों इस पूरे विजन को क्राफ्ट करने में. सो छूटी है या हमेशा ही छूटती रहती है. बट एज यू से, if you are into flirt, then you will keep on trying, right? You will make enough number of attempt to get hold of it, right? बिल्कुल. So that is what is happening in my life. I've not even got a hold of it once, right? People say I've done a lot, but I think that it's scratching the surface. And I will tell you what is the complexity and why it is difficult, and what is the reason why this fish you cannot easily catch. It will keep on slipping from your hand. It's a complex problem with many stakeholders involved, and everyone is right. The beauty of a complex problem is it's like a Premchand Upanyas, that every character is doing right, but the overall things are moving in certain direction, and you want to change that, and you know that everyone is doing right. You can't correct many. But for that you don't. So if there are like 5 stakeholders, one stakeholder will tell that 4 stakeholders are doing something wrong. Similarly, the other one say that other 4 are doing wrong. But if you start putting yourself in the shoes of each and every stakeholder, they all are doing right. And that's the problem of social protection. So who are these stakeholders? First, the politicians, right? Because the elections are being fought on the social protection line nowadays. Total spend of India on a social protection, the regional estimates it must be around 10 to 15 lakh crore. That amount to 30 to 40,000 rupees per family per year in India. That is much higher than the universal basic income claimed by Rahul Gandhi in the last election, or the many of the state government that they are trying to do. But this money is divided into very small pockets, right? Now from so that's a now you will ask me, what is the problem with the politician? Politicians will love to solve this problem. That's why they're increasing spend on the welfare. How do you deliver the welfare? For that, you come into the second stakeholder of this problem. That is bureaucrats. The whole governance mechanism. They are the people who deliver the welfare. The question between politics and bureaucrat, we all know it's not. It's good. They work together. They are working together for 70 years, but there is a conflict. No one can deny that, right? And so politician will want to get the benefit delivered to certain people. A bureaucrat will say that you can't flout the policies, right? Because I'm not sure about you. I'm here for 35 years, and I can be summoned by anyone at any point in time. So at their position, they are not wrong. They are saying that you can't flout the policies. You have to live within the policy's boundary. Whereas this person is in hurry. That I have a 5-year term. I have to deliver maximum to the public. Now there is a resistance. So that becomes kind of a thing of a problem. Third stakeholder is people themselves. People are also in habit of easy money. You can't take up easy money once you have given it to them. Yeah. You will become immediately, right, anti-people, government, if you start withdrawing the benefit from the people. Right? So the sense of entitlement, for example, we know that there was a pension. When it was withdrawn, how big a problem it was. Right? Then one rank, one in pension in army.
how Hmm. big problem that it was. Yes. Right now, we do a farm loan waiver. Now it is the part of manifesto of each and every government that if we come, we will do a this much of farm loan waiver. From Hmm. where this money is coming from, a taxpayer. Yes. We announce, every government announce so much things, Hmm. and people because of that are in the habit of using this money. But Hmm. it's okay that the purpose of the social protection is to help people with this money. But what are they doing with this money, Right. right? Are they, so is my BPL line Hmm. has improved, or the number of BPL families have been decreased? Hmm. Has the nutrition problem been reasonably solved after spending thousands of crore? Hmm. Is maternal mortality rate is going down? Is Hmm. my sex ratio in the primary school is improving? Primary school it is okay. Typically it becomes a problem when you go to the secondary school. Senior What is school. Yeah. happening? And now the fine line, it is happening because of your social protection or because of some other thing. What is the contribution of social protection into this, right? Hmm. Maybe people are getting aware Yeah. now. So that is Yeah. the that's the complex part. So now the people want something, politicians want something, bureaucrat want something, and Hmm. then you get into the ecosystem of the private world after this. So there is a consultant who want to make a report of a, that I was for a decade, a beautiful report that this problem should be solved, Yeah. the way it should be solved. But the intent is, at the end of the day, is to finish the assignment, get the milestone payment done. They hire a SI, a system integrator, who will implement such kind of a GovTech Hmm. reform. Same mindset. I have to deliver the software Hmm. and get my payment. Right. And if you're trying to solve such a complex problem, if politicians and bureaucrats are not able to settle it in 5 years, Hmm. how do you think that a private player in a 2-year Yeah. assignment will going to solve it? What you see as a success in this Quite sector, possible. right? Just think the people who have done this and the time they have taken, Hmm. or the Hmm. time it took to become Yes. real possibility. It's more than a decade. Yes. And of whatever we are talking about, every conflict happened not one times, 100 times. Hmm. The people, the politicians. When politicians, I say, when one politician, I will not name, but one politician will support a project when he or she is in the government, but will start opposing that as soon as the person goes in the opposition, True. right? So yeah, that makes GovTech very complex, but at the same time very interesting, and that's why it is very difficult to hold this fish. The risk Hmm. taking capability is very low. Hmm. People have nothing to lose, and I would suggest that take with this pinch of salt. The whole bureaucracy, they are very good, they are doing excellent work, but that is through their own intent, if they want to, Hmm. right? Beautiful. And you Yeah. will find at least a good number of people who are doing this, but the majority of them, they have a secured life for 30 35 years. Their risk appetite is very low. And it's not me, right? Everyone is trying. Honorable Prime Minister had started lateral entry in the government at the joint secretary level. That was a change. Again, it got into locked into the bureaucracy and the politician, and it slowed down. Still, it is happening, but I think last in the last tenure we couldn't close that thing in 5 years. In the Hmm. next tenure, I think we did for the first batch, but we haven't done for the second batch in these many times. But what you have Yeah. to do, you have to influx at least 25% or 30%, one third. Hmm. Then only we'll Yes. see anything reasonable change that is happening. Yeah, so sorry, I can keep on going, but yeah, there are too many variables in this thing, so you can't Hmm. hold this fish that easily. You should go on, because this is something that as a common person we don't have a direct access to this kind of an information, and even if we have, then we don't trust that information because we have stopped believing our media. We have stopped believing what is being read. So even if something very similar to what you're saying, Amit, would be printed, I would not know whether I should completely trust it or not.
but can Right. trust you because you're actually doing the work in that area, so your words are reflecting in your solution. So you're not a media agency who can be biased towards anything. What you're saying is what your product is all about, and hence the believability. Right. So thank you for sharing. Yeah. So I will, in fact, let me add one example. That's a very interesting example. Yeah. I will be not liked by for this by maybe by the government, but it's because of political issue. But it's Hmm. the people who are deep into this, they know it well, right? That a local politician, an institution, and a public, all three are jointly getting benefited. And through local politician, the politics is getting benefited. Mm. Through the local bureaucrat, whole bureaucracy is getting benefited. Person, anyways, is getting benefited because he is getting something, right, that he should not be getting in that way. Mm. So there is a complete understanding. No one want to change this. All stakeholders are happy. Mm. And just to spice it up, a department, a minister becomes a department, and let's say the department has a budget of 30,000 crore. Okay, let's assume. Mm. And I say that we will implement EasyGov kind of a solution, so that the power will be into the rules and the system and in the hand of a public. Mm. And let's say again take example for a 50%. Okay. So now this person who owns the ministry, he will say that my power of deciding who the beneficiary is for 30,000 crore will go away. So even if I have to please my voters, if I have to create my own clout, if I have to create my own support system, I should hold this money. I Mm. should spend from my own pocket. Then only, then only, then only it is possible. Okay, to and this is what. And now what will happen? Where the bureaucrat and politicians were kind of against each other, right? Now when it comes to the department, that this power of money will go from a department, then Yeah. they are close friend, Mm. right? Because he also understand that if Right. 30,000 crore goes, then my share will also go now. Yeah. So the politician is thinking that I will become a powerless. What is the Mm. point of getting a minister? And think, and again, right? As I keep on saying, put yourself in the shoes of that person. He has fought for that position for 15, 20 years. Yeah. Started from doing activism at the village level, grown up to the level, fought election, may Yeah. got defeated, may got elected, fought again based on the credibility to become a minister one day. It's a 25-year journey that he has to enjoy for 5 years. Yeah. And you are saying that person, give away your power. He took 25 years to enjoy this 5 years of power. Wow. Why will he? So if I put myself in that stakeholder, nothing wrong. Yeah. So that's why it's everyone is right from if you start Mm. looking the person from the perspective of that person. But Mm. in totality, it is not good for the country, Yeah. and that's what we are trying to say. So, Amit, when you say that everybody is benefiting, all the stakeholders are benefiting in this traditional process, right? अगर सब खुश हैं, सबको benefit हो रहा है, तो problem क्या है? Country, where do you want to take your country to? That's the problem, right? Everyone is happy, but still people are homeless. People sleep with empty stomach. Some people are who knows this system very well. They are exploiting the system. People who really need it, they are not getting it. I will not have any problem the day I go to the village or in the slum and I found that as per the vision of Honorable Prime Minister, people have a house with the clean toilet facilities and are getting 2 times of the meal. In case of a health problem, right, they are getting Ayushman Bharat health assistance, right? So and they have a livelihood opportunities to make things better from there. The day it happens, I don't have anything to do. My job is done, and I keep on saying that it doesn't matter if I do it or someone else do it.
but this has to happen for this country. This is important for this country. Why That's does the it matter reason. to you so much? I think this is connected something the way I was brought up, and the interest I got into. So I'm a poet and I write on philosophy. So from there, I started getting very emotionally connected with the things, and I got into the habit of finding a solution to the problem, and and sometime to the as complex problem as like death, right? The life. So that was my initial, you can say, class 7th to 12th kind of days, where I wrote my most of poetries on philosophy. And that was the point where it hit me hard. And that, again, one quote that is that has said in many ways by many people: the life of a purpose is a purpose of a life. Wow. Okay. Wow. Otherwise, right, everyone is living, everyone is earning, right, everyone is happy, right, Mm. but that's not what the human being is for. And people keep on saying someone will do, but who the someone will be? Right, someone will do, things will improve. ah so it's like no Swachh Bharat. I will Mm. keep, I will not, max to max, if I'm a responsible citizen, right, I will not do the littering here and there, Mm. but I will not do anything beyond that. Beyond that. And people say if it starts, everyone is doing this, then the country will be clean India. Mm. But you are able to do that because you are educated, and or probably you have reached to that level where this thing matters to you, or you have a time Yeah. to think. The people who are struggling with the daily problem of the food, housing, and someone is not ill, and I keep on saying that the it's a it's a corruption has a, this is a very interesting thing to study. uh, most of the people I know, everyone has a bribed a TT for a reservation for getting a bus seat in the early days. Till the time we did not have the automation in the Indian Mm. Railways. Mm. If we have traveled, we also bribed, right? So, and that is what happens. Your immediate convenience always take precedence Mm. for your own long-term benefit. What we say now that everyone knows that vitamin is good, and if you keep on having vitamin, you will be fit. Mm. But the aspirin is a better medicine because that gives you immediate relief. Vitamin is gyan. Aspirin Mm. is the solution. पेन किलर खाओ काम पे चलो. So everyone is looking for aspirin. No, nobody wants to do that. Why am I doing this? I think I keep on thinking something has got into my head, right? Probably I would say three people also influenced me a lot: Swami Vivekananda, Subhash Chandra Bose, and Acharya Chanakya. Mm. Somehow I read a lot, but somehow I had a special, you can say, inclination or liking about these three people. And I always thought that is a one person. If the person has a guts, the person has a resolve, and is ready to devote the complete life, the change is possible. Chanakya was resourceless. Mm. था Subhash नहीं Chandra उनके Bose पास was कुछ भी. thrown away out of India, Mm. right? Swami Vivekananda was not a politician, didn't brought any empire as such. Yeah. So I think the fundamental is your belief, and I Mm. think probably these people have also, so you can say mix of uh, the philosophy, Mm. liking for Hindi, from where I think patriotism come. Mm. These three politicians, I think that at very early in my age made me to think that we have to solve some problem one day, and that problem has to be the real problem. The problem has to be for the people, not for you or not for the a certain class of people. तो अमित ये आसान तो बिल्कुल नहीं है. क्या आपने इस पूरे प्रोसेस में जहाँ अभी तक भी जितना भी पहुँचे हो, क्या कुछ खोना पड़ा है यहाँ तक आने के लिए?
I don't think so. Things were it's like, right, you start asking a yogi, Hmm. right, that for reaching to the adhyatma, what you have lost. So he has lost everything, na? Probably the family, the peace, the house, the comfort. But ask him, did he lose? He didn't. It's our interpretation about that person that he has lost. Because we are looking that person also with our lens. Whatever I Absolutely. have, whatever I बिल्कुल. have lost, that's not a loss for me. Hmm. In fact, I'm grateful to the God that with little effort that I have did in my life, uh, uh, the destiny, uh, the ecosystem was always there to support me. And that clearly that makes you who you are, Amit. That it was a trick question, honestly. आपके वर्ल्ड में आपने नहीं खोया, मैंने नहीं क्योंकि खोया। हाँ, क्योंकि जो आपने पाया है आप उसी के लिए जा रहे थे, वही तो आप Correct. पकड़ने की कोशिश That, कर रहे हैं. that was the path, and that was हम्म. very satisfying. If Yeah. you ask me, Amit, you were in Accenture, that too kind of working for the foreign government with all the luxury that one can get. Yeah. From there to here, were you more happy when you were in the early startup days? Not like now, Hmm. your early startup days Hmm. versus you were in the Accenture. I would say any day I was happy when I was in my startup days. The difficulties and challenges were far more, but Yeah. somehow from inside there was a अब कुछ कर रहे हैं, मजा आ रहा है, वरना कर ही नहीं रहे थे. बाकी तो इट्स लाइक ना दैट नथिंग इज सर्टेन, एवरीथिंग विल चेंज, राइट? सो आज क्या करके, आज क्या किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड देयर इज अ एवरी डे देयर इज अ समथिंग टू डू, समथिंग टू कंट्रीब्यूट. That's who you are. So as a person, I'll give you 3 choices. Choose which one of you is this. And if none, then you can say that as well. So are you a right versus wrong person? Are you a fair versus unfair person? Or are you a me versus you versus they person? Let me first understand this. राइट वर्सेस रॉन्ग आपका नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन, एक नैरेटिव, जैसे आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो राइट रॉन्ग ढूंढते हैं, नहीं, फेयर अनफेयर ढूंढते हैं, या मैं तुम और वो ढूंढते हैं, या मिल जाता है आपको उस तरह से सुनने लग जाती हैं चीजें कि जब भी कोई सिचुएशन होती है तो एक राइट रॉन्ग की एक गुत्थी चल रही होती है दिमाग में कि I सही है would, I गलत would, है, I would go with the middle one. I will go with the middle. फेयर अनफेयर. Fair and fair. Right? Because it's a very subjective thing. Hmm. Right, wrong is kind of a declaration. Yeah. That you're right, maybe wrong for other wrong, maybe right for the other. You can be always with your belief. Right? You try to be fair with the people and give benefit of doubt to the people always. Your any judgment about a person should start with the good. It should never start with the bad. And from there you can build. And always think that कुछ तो मजबूरी रही होगी उनकी भी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता. वाह. आए शायर पर्दे के सामने, वाह वाह वाह. सो फेयर और अनफेयर भी अमित है तो सब्जेक्टिव भी है ना. कोई है ना, कोई चीज आपको फेयर लग सकती है. You try to be fair from with the optics of the other person. Not from, अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से फेयर बनने की कोशिश कर रहे हो तो राइट रॉन्ग जैसा ही हो गया, वो सेम हो गया. Then you are trying to be a binary. यार मैंने तो अपना काम ठीक से किया, ठीक है, I did everything right. Why this is not happening? Someone must be doing wrong. So no one is doing wrong. Everyone is doing what they're supposed to do. As I've told you, the complex. And what they think is the right thing to do. सब अपने हिसाब से सही कर रहे हैं. I'm yet to meet a person, right, who want to damage himself or herself. Everyone is doing right for them. They believe it. You are putting your perspective to them that no, you are doing it wrong. Tell me, if they know that they are doing wrong, they will not do it. There is no one, right, whether educated or uneducated, no one is that stupid that will do something that is wrong for that person. जानबूझ करके. हाँ, वेलफेयर में ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एंड एज आई सेड दैट ना, वहाँ पे प्रॉब्लम विटामिन और एस्पिरिन वाली आ जाती है कि मतलब मैं सिटीजन हूँ, मुझे वेलफेयर मिल रहा है,
और मेरे को अगर ना ग्राम प्रधान के साथ सेटिंग करके थोड़ा इधर उधर कर करके भी बनता है, तीनों लोग बना लेते हैं, राइट? बट दे आर फेयर. I will not say that those will are fair. They are fair. In the current context, they are doing whatever, and that's why I judge. I will not say they are wrong. The whole ecosystem has been given in that way. अगर आप बोल रहे हो हर आदमी इस दुनिया में संत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम ही क्या है ना? फिर स्वच्छ भारत की क्या जरूरत है अगर आदमी कूड़ा उठाना लगेगा? If no one will litter, then where is the problem? Yeah. Don't need an initiative like Clean India and then put a sass on everyone. Right. So let's be realistic. And I see fair and unfair as a more of a realistic lens. So where did this pattern emerge from? Can you see it in your life? Largely GovTech. So initially it was more philosophical, but I think when I started getting more and more into this problem of social protection, and I started realizing that why I'm not able to solve this problem, after doing everything that is right for the country, right for the economy, and then I started realizing कि यार इतनी ही easy problem होती तो solve हो गई होती. It's been 70 years and it's a 10 lakh crore rupees problem. World will not wait for people like you to solve this problem. Right? So this is another thing that I started being from. So you have to, that means your understanding of the problem is superficial. Go समझ deeper. ही नहीं रहे उस बात को. समझ ही नहीं रहे हो आप आदमी बोल देता है ना, मतलब बहुत आसानी से बोल देगा कि यार मतलब अगर वो चाहे पाकिस्तान JNK की प्रॉब्लम कल सॉल्व हो जाए. अगर वो इतनी ही इजी होती तो सॉल्व हो गई होती. You don't understand the complications in the problem. You don't understand the stakeholders involved. You don't understand the consequences of the decision that will happen, right? And that's why I keep on saying, another my favorite is, stop judging people for right or wrong decision. Right? Judge people for not taking decision. If someone is at the power to take decision, if not taking the decision, that person is unfair to me. I will say, hey, this person is unfair. You take a decision. Let it be right or wrong. No one knows. And let historian decide that whether it was right or wrong. अपना कर्म करो ना, गीता में वही लिखा है. अपना कर्म तो करो यार ठीक से. The future will tell. बहुत सुंदर बोला आपने कि अगर डिसीजन मेकर्स डिसीजन नहीं ले रहे हैं, प्रॉब्लम वहां पे है. बात सही और गलत की तो वैसे ही इतनी सब्जेक्टिवनेस है हर एक चीज में कि हम उसको किसी भी तरह से नहीं माप नहीं सकते. कोई भी डिसीजन सही नहीं होता है, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता है. The truth is always in between. Yeah. And there are many factors to everything. And it changes with each and every stakeholder of that problem. Right? JNK के जितने भी stakeholders हैं, सबका अपना perspective है problem का. और सब अपनी जगह ठीक है. सब अपनी जगह ठीक है. I'm yet to meet a person, as I keep on saying, who wants to harm himself or herself. So what is it about the not so good governance that has personally impacted you, Amit? फर्क पड़ता है आपको उस चीज से? आप कह सकते हो, मतलब वो बचपन में वो जो फिलॉसफी एंड द पोएट्री का जो मिक्स था उसने कभी भी चीज़ों को आया गया नहीं होने दिया. मतलब I am very tough in terms of decision making and everything, and you know, right, I have to take a decision and every time I take a decision, but I think from inside, right, I may be a very emotional person, right, who if sees something on the ground that hurt me a lot, and if people are not happy, that hurt me a lot. So if someone is not getting a food, that hurt me a lot. So एक छोटा सा एक anecdote है. From there my poetry started. Class 7th में मैं वो गेहूँ पिसवाने के लिए चक्की पे जाया करता था. तो मेरी मदर ने मेरे को दे दिए, मुझको कुछ तो आई थिंक 100 रुपए के आसपास दिए. मेरे को पिसाई जो है वो 17-18 रुपए से ज़्यादा नहीं थी. अच्छा. जो 20-25 किलो की बोरी रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी. ठीक है, मैं ले करके अपनी साइकिल पे अपने घर से चक्की तक गया. ठीक है, जब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी मिला. उसने बोला कि ना मेरी बहुत बुरी हालत है, ये है वो है, मैं परेशान हूँ, मेरा किसी ने पर्स मार लिया, अब मैं क्या करूँ, आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे अपने घर जाना है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ पे आता रहता हूँ,
आप जो भी हम्म, पैसे दे दोगे मैं अगले हफ्ते आके आपको वापस कर दूँगा। हम्म, मैंने कहा अच्छा, मैंने काफ़ी सोचा-वोचा, मेरे को लगा यार तो बहुत परेशान आदमी है, मैंने उसको पैसे, मैंने कहा यार मेरे पास ₹500 तो नहीं है। तो हम्म, उसने बोला कितने आपके पास? मैंने कहा 100। तो मैंने कहा आप क्या कर लोगे 100 में? बाकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी। ऑब्वियसली हम्म, एनालिटिकल ब्रेन आल्सो वर्क्स, yeah, राइट? आपका टिकट तो आएगा नहीं आपके घर जाने का। तो उसने बोला कि नहीं बट अगर 100 भी मिल जाता है तो एट लीस्ट, ठीक है, मेरे पास अभी का मील हो जाएगा और मैं आई नो समवन, ठीक है, मैं उसके पास तक तो पहुँच जाऊँगा कम से कम। तब फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, हम्म, राइट? सो मैं उसके पास पहुँच जाऊँगा और जाकर के उससे मदद ले लूँगा। मैंने कहा हम्म, रीज़नेबल, टेक मनी। मैंने कहा नहीं वापस मत करना, ठीक है, हाँ, मैं इस प्रॉब्लम को घर में सेटल कर लूँगा। उसने, नहीं, 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 आप ऐसा मत बोलिए, हम इसको वापस करेंगे, हम हाँ, इसको वापस करेंगे, हाँ, ठीक है? तो कब? उसने बोला 1 हफ्ते बाद इसी तारीख को आ जाना, इसी डे हाँ, आ जाना। आई डोंट रिमेंबर द डे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। बट मैं घर आया तो मेरे को, मैंने पूरी कहानी बताई, तो मेरे हम्म, घरवालों ने मेरे को खूब सुनाया, गधे हो, तुम्हें समझ नहीं है, बेवकूफ़ बना दिया किसी ने, ठीक है, हाँ, तुमको लूट लिया किसी ने, ये अच्छी बात है। बट समहाउ मेरे अंदर एक बिलीफ था कि नहीं, मैं इन सबको गलत प्रूफ करूँगा, वो बंदा आएगा और मुझे पैसे देगा। हम्म, तब मैं इनको बताऊँगा कि ऐसा नहीं होता, ठीक है? एंड अ वीक आफ्टर दैट आई वाज़ देयर, ठीक है, वेटेड फॉर हिम फॉर 3-4 आवर्स। जब सनसेट हो गया मेरे को लगा घर में डाँट पड़ेगी, और देर वेट किया तो मैंने कहा नहीं आएगा, झूठ बोला इसने, ठीक है? एंड आई वाज़ ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड कंप्लीटली, ठीक है? कि बट उससे मेरे को ये नहीं हुआ कि मैं हर आदमी को, जो गरीब आदमी है उसको मैं, ठीक है, उस नज़र से देखने लगूँ कि ये चीट करेगा। हाँ, मेरे को लगता है वही कि मतलब यार प्रॉब्लम तो है। हम्म, ये भी है, फिर मैंने वही अपनी एक पोएट्री लिखी थी, वर्तमान युग का परोपकार, इसी के ऊपर, और मैंने हाँ, अंत में लिखा था, पोएट्री तो लंबी है, कभी और सुनेंगे, बट मैंने अंत में लिखा था कि जब मैंने अपने को विचारा, तो मैंने सोचा मैंने भी तो न किया था परोपकार, मैंने भी तो किया था व्यापार। हम्म, परोपकार में देने के बाद हम्म, कभी भी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हम्म, मैंने उसको, मेरे को बोलना चाहिए था अपने घर में, या अपने अंदर जो मैं मंथन कर रहा था 1 हफ्ते से, उसमें मैंने परोपकार वर्ड का मिसयूज़ किया। मैंने उधार दिया था। हम्म, सो 1 हफ्ता मैं भी गलत विचारों में था, एंड आई थिंक ये उसका पनिशमेंट है कि जो मेरे विचार गलत थे, कि मैं उधार को परोपकार मान रहा था। वाह। आप उधार को परोपकार मान रहे थे या परोपकार को उधार मान रहे थे? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था उधार वापस आ जाएगा। हाँ, मैं तो उस बट टाइम पे इस पर्सन देते पैसे नहीं कि देगा मेरे को ये, हुँ, वो तो उधार हुआ तो ना वो। आपके हिसाब से तो उधार था वो। हाँ, तो उधार को बाद मैं में पता चला वो तो परोपकार ही समझा जाए तो ठीक रहेगा। एग्ज़ैक्टली, तो उसी को वो पोएट्री लिखी थी कि डेफिनिशन ऑफ द वर्ड, राइट, वो मीनिंग खोते जा रहे हैं। तो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स जो आपको हर चीज़ से निकाल लेती हैं? आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर की होती है, ठीक है, कि ऑलवेज़ देयर इज़ अ अपॉर्च्युनिटी इन एवरीथिंग इन द लाइफ इन द वर्ल्ड। कुछ भी ट्राई किए बिना मत छोड़ो, ठीक है? एक्सट्रीमली पॉज़िटिव, राइट? फॉर दैट सम पीपल टेल मी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने कहा यार कर रहा हूँ, बट अगर नहीं करूँगा वेस्ट, तो पता कैसे चलेगा कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? उसके लिए भी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। ये भी थ्योरी में नहीं समझ में आएगा, मुझे करके ही समझ आएगा। हाँ, करके ही समझ आएगा। तो आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, हुँ, राइट? बिकॉज़ देन इफ यू बिकम रीज़नेबल विथ योर टाइम, राइट? देन you will become a reasonable person. You will never do the unreasonable thing. Another and then uh, you and then you'll have a reasonable life. reasonable life. The most unfortunate part is of people, or for that matter entrepreneur, or for anyone, we want to achieve unconventional result through a conventional path. That's a trap majority of the people are in. हुँ, Everyone want to achieve the unconventional result, but no one want to take the unconventional path. जब पाथ लेने की ट्राइड बारी एंड आती है, टेस्टेड पाथ चाहिए। हाँ, जब हुँ, पाथ लेने की बारी आती है, और पाथ ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक बहुत लंबा रास्ता है। इट्स योर हाँ, एवरी डिसीजन,
your smaller decision that you take. That is path. Yeah. Okay. Yeah. So for example, यही इसी का example ले लो कि Huh. I want to meet great people, Hmm. right? So that Hmm. my network is great, right? And so that and I want to raise up my network. Yeah. Okay. Huh. So, but that is not possible, na? Why will Hmm. other people will meet? What they have in it to you? And how will Yeah. you know that the person is a great? Hmm. If someone else want to meet a great person, what will he do? Then you will not meet that person, na? Huh. So come on, be realistic, right? The first thing is that this approach itself is wrong. Take an unconventional path. And that unconventional path is meet everyone. Right? You don't know what is going to do. Nobody will going to take your lever, right? The time they will take, obviously, but there is always something to learn. Yeah. So don't say no to the first meeting. But yeah, obviously your life will become a tricky. Sometime you will start getting into those time challenges. Yeah. Still, don't say first no. Till the time you can. It's a there is a point where it is start hitting the mathematics that you have these many minutes in the day and how much Yes. you can do. But at least Yeah. from your side, your intent should be meet people. Intent should be that. Yeah. Right. Yeah. So I think that is one thing, and second thing is fight till last second. And the definition of last second is very subjective from people to people. Right. So for me, it's like जैसे मान लो आपकी स्टार्टअप है, Hmm. आपके पास इस महीने के सैलरी के पैसे नहीं है और आपके पास 8 एम्प्लॉय, Hmm. आप बोलोगे यार मेरा लास्ट है कि मैं 25 तारीख तक तो करूँगा, वरना मैं कुछ करूँगा। दूसरे का लास्ट ये होगा कि मैं यार 31st तक ट्राई करूँगा और मैं 31st तक फाइट मारूंगा रात में 12 बजे तक। अगर हो गया तो उठा करके लोगों के घर में दे आऊंगा जाकर के। एक का लास्ट ये होगा कि यार मैं फाइट मारता रहूंगा एंड आई विल ट्राई दी ऑल्टरनेट पाथ, किसी से उधार लेकर के कुछ करूँ करके लोगों को वैसे करूंगा, और आई मे pick up a phone and I talk to all 5 employees that this is the situation I am in. How many days you can support me? Another person, this could be the last. This is not end. Till the time that person has not left you, that is also not the last. Till the time everyone has not left you, that is also not the last. The day you lose the hope that you will not get them back, that is the last. So endurance of the extreme, I think that's my another strength. You're such a strong man, Amit. Such a strong man. Golf Such a tech is a man of difficult conviction. problem. Golf tech is a different problem. Golf tech is a difficult problem. You have to be, there is, otherwise you can do a startup, you can't do a golf tech. कभी कोई ऐसी वीकनेस है जो आड़े आ जाती है? ये भी ना ये स्ट्रेंथ वीकनेस वाला सवाल बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, राइट? बिकॉज लाइक राइट और रॉन्ग, इसमें भी क्या होता है ना, वो क्या कहते हैं कि वो हर स्ट्रेंथ के साथ एक वीकनेस आती है, एंड दैट्स व्हाई है ना, वो बचपन में भी कहते थे कि आपका ट्रुथ बोलना अगर स्ट्रेंथ है तो आपकी युधिष्ठिर की वीकनेस है, राइट? अगर आप दान देना कर्ण की स्ट्रेंथ है तो मित्र को धोखा देना उसकी वीकनेस है। So one day, कुछ ना कुछ साथ में आता है। one day when you will play the game, you will compromise on something, right? No one is God, can't win all the battle with the flying color. One strength will come with some other weakness. So for example, one of the weakness that links to my first strength, right, that I do not know sometimes where to stop. If I've invested, let's say, already significant number of hours, and I know that it is not going to be meaningful, not for me, for that person as well, because that person is not listening to me.
बट माई जिद कि नहीं नहीं, वो सुनेगा एक दिन, वो लास्ट तक लेकर के जाएंगे, ठीक है, कभी तो कुछ तो, मैं क्यों छोड़ दूं, वाई विल लेट इट गो, that takes away time from me for putting into those things where probably I could have made the better impact. अब क्या करें, या तो स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज करें या उस वीकनेस को सॉल्व करें, ठीक है, तो अंत में तो वही है. सेकेंड इज, आई थिंक आई वुड से द वीकनेस इज आई एम टू राइटियस, राइट, लाइक पॉलिटिक्स में ये ऐसे 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 होना चाहिए, एंड आई गेट लॉक टू माई थिंक कि मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए, राइट. द कन्विक्शन, द स्ट्रेंथ बिकम्स द वीकनेस. क्यों? क्योंकि भैया ऐसे नहीं होता ना. घर बनानी है तो पहले फावड़ा उठाओ, मिट्टी खोदो, ठीक है. चेंज हैज इट्स ओन टाइम. यस, डोंट बी इम्पेशेंट, आराम से. और गॉफ्टेक ने भी, मतलब गॉफ्टेक मुझे बहुत सिखाया. आई एम अ चेंज पर्सन, बट दिस इज द वन वीकनेस दैट आई स्टिल से, कि अभी भी आई गेट कैरीड अवे. मेरे को, आई डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप. देयर इज अ पॉइंट दैट माय क्लाइंट इज गोइंग टू गो दिस पाथ ओनली. अरे यहाँ तक तो ले आओ उसको, फिर आगे उसको कहीं और लेकर के जाएंगे, बट मैं उसको वहीं से और आगे ले जाने की कोशिश करूँगा, और उसका रिजल्ट ये होगा कि वहां तक भी आने को तैयार नहीं होगा. अरे तुम ये करने वाले थे प्रोबली. और ऐसा नहीं है कि ही इज रॉन्ग, प्रोबली वो भी नहीं देख पा रहे हैं अभी कि वहां पे पहुंच. एक बार जब वहां पहुंच जाएगा तो वो देख पाएगा कि अब आगे क्या होगा, तो क्या पता वो मेरी बात को मान ले, ठीक है, बट मैं उसको लेके नहीं जाऊंगा वहां पे. मैं पहले उसको इतना बता दूंगा कि वो कहेगा अरे यार ये तो सही नहीं, घबरा जाएगा. तो या, सो आई कैन से दीस आर द टू वीकनेस दैट दोस आर देयर. आई कीप ऑन ट्राइंग. बट मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे हिसाब से अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है. जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस, आपने बिल्कुल अच्छा बोला, बहुत सही बताया कि वो पैकेज डील की तरह साथ में आते हैं. वो कोई स्ट्रेंथ होगी तो उसका कुछ एक काउंटर, एक उसके साथ में कहीं हम अटक रहे होंगे. लेकिन अगर हम उस चीज़ से अवेयर होते हैं तो वो ही वीकनेस और वो ही स्ट्रेंथ, ना सर हमारे माथे चढ़ती है और ना वो वीकनेस हमको बिल्कुल तोड़ती है, क्योंकि हम आज उस बारे में थोड़े से अवेयर हैं. तो जैसे कि अगर, जैसे आपने बोला कि आपकी टीम, आपकी वाइफ आपको जब बताती हैं कि ये है, अब आप क्योंकि अवेयर हो इसलिए आप उसको पकड़ लेते हो झट से कि हाँ आपको पता है, हाँ ये होता है, अब आप उस पर रेजिस्ट नहीं करोगे. शायद कुछ साल पहले आप उस चीज पे रेजिस्ट भी करते रहे होगे, नहीं ऐसा नहीं है. अब वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू, इट्स अ लॉन्ग वे टू. Yeah, and वो हम सबके साथ में है. The point of this conversation is really to just see and just experience कि ये जो एक इंसान, जो आप हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनके सारे पहलू होते हैं. और हम जब आपको एज ए लीडर मान रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि आपने क्या किया, हम आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपके दोनों पहलू है, तीनों चारों पहलू है, उससे छुप नहीं सकते और ना छुपाना चाहते हैं. और कहने का मतलब सिर्फ ये तात्पर्य ये है कि ये सब कुछ मिल के ही बनते हैं अमित. इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि कट कॉपी पेस्ट की तरह मिल गई अमित को और चढ़ गए वो सीढ़ी पे. ऐसा होता नहीं है कभी. नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, किसी की जिंदगी में नहीं होता. And that's people should just not get carried away. Yeah. That kind of people should. And I keep on saying some of the budding entrepreneurs, यार वही करना जो बिलीव करते हो, जिसके लिए जान दे सको, ठीक है. फाउंडर बनने के लिए स्टार्टअप मत बनाना, ठीक है. ठीक है, अगर नहीं भी रहोगे तो भी उसके लिए जान दोगे, तब बात हुई. सो इसी क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन ये आया कि जब हम फाउंडर्स और स्टार्टअप्स और इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट और रिस्क और एम्बिशन और फिशेस की बात करते हैं, तो मेरा कोई सपना है, मैं उस सपने को पीछे भाग रही हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे को और बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं उस चीज़ को अपने मुकाम तक ले जाने के लिए. और अमूमन तौर पे हम सबके पास सारी स्किल्स नहीं होती हैं जो एक चाहिए होती है एक चीज़ को अपने पूरे पड़ाव तक लेके जाने के लिए. तो आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, हर पोजीशन में काम किया है, कुछ बता सकते हैं कि जब आप किसी तरफ जा रहे हो और आपका एक पर्टिकुलर स्किल हो और बाकी के ना हो, तो क्या करें? काफ़ी कॉमन है. सो आई वॉज थ्रू आउट हिंदी मीडियम,
तो मेरी हम्म, इंग्लिश के जो है ना, और बीइंग फ्रॉम यूपी हिंदी मीडियम, हम्म। नहीं थी स्किल। कौन सी इंजीनियरिंग स्किल नहीं थी? इंग्लिश, हम्म, इंजीनियरिंग करने गए तो किताबें भी इंग्लिश में थी, ठीक है। और बाद में एक पॉइंट में था, हिंदी को लेकर के इतना ज़्यादा वो थे मशगूल कि हिंदी 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 चलते रहे कि हम तो सब हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। वो स्टबर्न था एक पॉइंट, तो वो एक स्किल थी, ठीक है, जो मेरे समर ट्रेनिंग में, एमबीए की समर ट्रेनिंग में, राइट, मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने मेरे को बोला कि यार यू डिड अ अमेजिंग थिंग, राइट, फ्रॉम इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इन द ग्राउंड एंड एवरीथिंग, बट यार ये तेरा कम्युनिकेशन बड़ा वीक है। तो मैंने उनको बताया कि मैं हिंदी मीडियम से रहा हूँ, क्लास 12 तक कभी किया नहीं, ठीक है, और वो शायद बचपन में इतना दिमाग भी नहीं था। पेरेंट्स ने ट्राई किया था बाय द वे इंग्लिश मीडियम में, बट सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उनको वापस हिंदी मीडियम में डालना पड़ा। ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे। कृपया करके ध्यान ध्यान दें कि मैसेज को सीधा समझें। पेरेंट्स चाहते थे, बस इन्होंने नहीं किया। ठीक है, समझ गए। आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो क्या करेंगे पेरेंट्स? क्या करेंगे? मैं हाँ, उससे तो बेटर है कि हिंदी में डाल दो, कम से कम पास हाँ, तो होगा। बिल्कुल। पास हो रहा था कम से कम वहाँ पे, चलो स्कॉलर वही तब भी नहीं था, बट पास तो होता था। हाँ, हाँ, ठीक है। एनीवेज, so that was the story. So English हाँ, was the, then Jajit told me, Dr. Jajit, he told me that day कि यार हो गया, वो पास था, कब तक रोते रहोगे इसको लेकर के, ठीक है, एक्सक्यूज देना बंद करो, अगली बार कोई बोले तो एडमिट करना, ये मत बोलना कि तुम हिंदी मीडियम से थे, वाह। कह रहा एडमिट करना कि मेरी इंग्लिश कमजोर, देखो खुद भला होगा। Later on, I became consultant, wrote many reports in English only. हाँ, मतलब उतनी फ्लुएंट इंग्लिश कभी भी नहीं हुई जो कि एक वो आर्टिस्टिक इंग्लिश होती है, हाँ, शेक्सपियर टाइप की, बट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश काफ़ी ठीक हो गई उसके बाद, वो एडमिट करने से हुई। एडमिट करने से। जब सो आप ये कह रहे हो? जयजीत की हाँ, बात मेरे को लगी दिल पे, यार ये कब तक कि मैं हिंदी मीडियम से था। मैंने कहा डिसाइड कर लो ना फिर, डिसाइड कर लो, काम ही नहीं करना, या उस फील्ड में काम नहीं करना जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत हो। जहाँ इंग्लिश की जरूरत हो। बहुत बढ़िया। नहीं तो फिर एक्सक्यूज छोड़ दो पहले, अगर इंप्रूव करना है तो एक्सक्यूज छोड़ो पहले अपनी लाइफ से। बहुत बढ़िया। तो आप बोल रहे हो कि जब भी हम रियलाइज करते हैं कि हमारी कोई स्किल मिसिंग है, जो कि हमारे आड़े आ रही, रास्ते में आ रही है हमारे, तो पहले तो उसको एक्सेप्ट कर लें, एडमिट कर लें कि हाँ ये कमी है। और क्योंकि सही बात है, बहुत बार हम उसको देख नहीं पाते हैं और कोई ना कोई रीज़न आ जाता है हमारे सामने, जो बहाना होता है, बट वो हमारे लिए रीज़न जैसी एक बहुत बड़ी सिचुएशन लगती है कि ये वजह था इसलिए मैं नहीं कर पाया। अरे तो पहले तो उसको एडमिट करेंगे तो रास्ता शायद उसके बाद निकल ही आएगा। निकले कुछ ना कुछ, मतलब इट वॉन्ट बी इमीडिएटली बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, बट हम्म, एटलीस्ट उस दिन आप ना, वो कहते हैं ना माइक्रो स्टेप, पहला हम्म, कदम उस दिन, रास्ता लंबा है, मैराथन है, बट हम्म, एटलीस्ट पहला कदम तो रखोगे उस दिन, वरना तो कदम ही नहीं रख रहे हो। सो द लास्ट क्वेश्चन, फॉर आई नो आपके साथ बात तो कितनी भी चल सकती है, बट एक टॉपिक जो शुरू किया है और एक एक जो ताना बाना बैठा है, उसके सूत्र में एक आखिरी सवाल कि यू आर अ पोएट इन एन एक्टिविस्ट सोल। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बोल रही हूँ। यू आर अ हम्म, पोएट इन एन एक्टिविस्ट सोल एंड हम्म, एन entrepreneur's mind. हम्म। Which one messes you up the most? अभी तो एंटरप्रेन्योर ने बैटल जीत ली है। Messing up की। सॉरी, मैसिंग अप, हाँ। मैसिंग अप भी वही कर रहा है, मतलब नॉट लाइक मैसिंग अप लाइक इन नेगेटिव सेंस। नहीं, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इट्स अ पॉजिटिव सेंस कि लाइक आप एक पोएट हो और एक अभी तो अभी एक्टिविस्ट का सोल है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ गॉफ्टेक भी छोड़ दो आप, तो मेरे को ये हम्म, लगता है कि there are so many problems, there are so many opportunities, why people are not solving it. हम्म, फॉर एग्जाम्पल, राइट, हम एक डेटा मॉडल बना देंगे जिससे कैंसर का अर्ली प्रिडिक्शन होगा, हम्म, बट नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट ग्रो करते जा रहे हैं ईयर ऑन ईयर, हम्म, ठीक है। प्रिडिक्शन मॉडल से क्या होगा, लेबोरेटरी कंपनी एंड द फार्मा कंपनी विल बी एबल टू सेल मोर प्रोड्यूस, अर्ली प्रिडिक्शन से यही होगा। हम्म, डायबिटीज का अर्ली, कोई भी एआई मॉडल आप बनाओ, हम्म, उसका अर्ली प्रिडिक्शन करने से हम्म, किसी न किसी को फायदा होता है। बिल्कुल। मेरे लिए अगर ट्रू एंटरप्रेन्योर
मेरे लिए वो है जो डिसाइड करे कि मुझे कैंसर पेशेंट की नंबर डाउन करनी या मेरे को नंबर ऑफ डेथ कैंसर से कम करनी है, राइट? आप बनाओ एआई, बट उसके बाद एक नंबर लेकर के आओ ना Yeah. कि कितनी डेथ आपने रोकी। कम कर दी, बचा दिया। अगर आपकी नंबर ऑफ डेथ बढ़ रही है तो मैं क्या करूं आपके एआई टूल पे? नाउ आंसर इज नॉट इन द टेक, इट्स लाइक अ गॉफ टेक काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपका फूड में आप पेस्टिसाइड यूज करते हो, इंपोर्ट इतना बढ़ा हुआ, राइट? अभी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे कदम लिए हैं, अगेन जहाँ पे बात की है जैविक कृषि की, नेचुरल फार्मिंग की, टू रिड्यूस पेस्टिसाइड इन द प्लेट। इतना पेस्टिसाइड खा कर कैंसर ही होगा और कुछ हो नहीं सकता, और कुछ होगा नहीं, बिल्कुल। सो अगर आप एग्रीटेक स्टार्टअप हो, यार एआई मत लगाओ प्लीज, कि मतलब मैंने एआई लगा करके बताऊंगा कि ना इसकी इस फल में कौन सी बीमारी है या इसमें कौन सा कीड़ा है और मैं ना उसकी दवाई बताऊंगा और वो ऑर्डर हो जाएगी, फंडिंग मिल जाएगी, मैनी स्टेक होल्डर हैव इंटरेस्ट इन योर आइडिया। ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनी को भी इंटरेस्ट है आपके आइडिया में, क्योंकि उसकी सेल, वो तो ये देख रहा है कि मेरी सेल कितनी बढ़ने वाली है। ठीक है, अब तो लोग खुद ही ऑर्डर करेंगे, वो तो अपना एनवलप साइज देख रहा है, मेरा एनवलप साइज कितना बढ़ने वाला है। ठीक है, जो चीजें भगवान ने एबंडेंस में दी थी उसको हमने स्कार्सिटी बना दिया है। ठीक है, सो वो जो कैपिटलिज्म का जो अगली फेस है वो झेल रहे हैं हम लोग। आई एम नॉट सोशलिस्ट, राइट, बट because extreme of both of them is bad. Yes. Life is somewhere in between. And like ना नेचर में कहते हैं ना कि नेचर इज ब्यूटीफुल, कोई फ्रूट किसी दूसरे से अच्छा है खराब नहीं होता, हर फ्रूट है, हर वेजिटेबल है, एक प्लांट में हर तरह के पत्ते होते हैं, सब साइज भी अलग हो सकता है, कुछ में कीड़े लग जाएंगे, कुछ में नहीं लगेंगे, बट दैट्स द वे, दैट्स द रियलिटी, एक्सेप्ट इट। You are part of a nature. Don't try to be the nature. You are not. So वहाँ पे हमें अगर हम फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, और मेरे लिए फंडामेंटल प्रॉब्लम है फूड, एयर, वाटर, इससे कनेक्टेड प्रॉब्लम ऑब्वियसली क्या है, वेस्ट। अगर वेस्ट कंट्रोल होता है तो तीनों प्रॉब्लम पे बहुत इंपैक्ट आएगा, एयर क्वालिटी पे भी, फूड क्वालिटी पे भी और वाटर क्वालिटी पे भी। सो या, सो आई थिंक आफ्टर दिस गॉफटेक एंड एवरीथिंग, ठीक है, वो मतलब ये तो चल ही रहा है तो सॉल्व नहीं हुई है, बट रियलाइजेशन हुआ फंडिंग रेज कर करके कि लोग ढूंढ क्या रहे थे और मेरे अंदर क्या मिसिंग था, तो समझ में आया। लोग कहते तो हैं वी वांट द पीपल आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बट नो वन वांट अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। I totally second you on that. Absolutely. Very well said. Absolutely. So अब तो वही रह गया, पोएट और बेचारा कवि जो है ना वो थोड़ा पीछे हो गया है, वो 15 अगस्त को याद आता है तो कुछ लिख देता है, रश्मि रथी को पढ़ लेता है, कभी कभी कबीर को पढ़ लेता है, यही सब करता है, बट वो आपको उतना नहीं झंझोर रहा है इस वक्त, और अच्छे सेंस में जितना आपका ये एंटरप्रेन्योरियल माइंड, that has become more of a thing to calm down. बहुत दिमाग क्लटर हो गया है, डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर रहा है। ब्यूटीफुल। अमित, आई थिंक आपका काम ऐसा है जो कि अगले कुछ सालों तक तो नहीं खत्म होगा, अगर हो जाएगा तो हम सब लोग बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, और अच्छी जिंदगी से मेरा खुद का पर्सनल तात्पर्य पैसे शोहरत से नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से है। जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ में मुझे ये चिंता ना हो कि अगर मेरी माँ और बेटी घर में अकेले हैं तो कुछ गड़बड़ है, और जिसमें उस क्वालिटी ऑफ लाइफ से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं सड़क पे निकलूं तो किसी तरह के डर और भय से ना निकलूं। उस क्वालिटी ऑफ लाइफ से मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे पास खाने के लिए है तो मैं अपनी प्लेट छोड़ के मुझे ये सोच के ना उठना पड़ जाए कि कोई है, मैं जानती हूँ कोई है और वो उसके प्लेट में खाना नहीं है। वंडरफुल, लवली, यू समराइज्ड इट वेल। या सो अगर आपका काम और हम सबका काम किसी भी तरह से अगले कुछ सालों में इसका कुछ अंश भी पा पाए, छोटा सा भी कुछ पा पाए, उतना ही करना, तो ये पूरी जर्नी
जो आपने अपने लक्ष्य में निकाली है, मैंने मेरे लक्ष्य में निकाली है, शायद कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। और अगर हमारे आसपास ये वाली कुछ सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाएं कि हमारा जो फियर है, फियर को हम किसी लेवल पे भी डाउन कर सकें, तो लाइफ विल बी वर्थ इट, इजंट इट? राइट। वो माउंटेन मैन का डायलॉग है ना, कौन कहता है कि पहाड़ टूटते नहीं है, तबीयत से एक बार हथौड़ा मार के तो देखो। सही बात है। और आपने सीरियसली। बिल्कुल इससे जो आपने पिछली बार कही थी हमें बिल्कुल सही है कि जो आप फाउंडर और जो एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप का ये जो एक दौर चला है, इसने बहुत कुछ दिया है लेकिन बहुत कुछ ले लिया है। नहीं नहीं। और अब आई थिंक हम लोगों को रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो हम बिजनेसेस क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, देयर आर पीपल करेक्ट। इन्वॉल्व, देयर आर ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व। सो कैपिटल मीन्स नथिंग, venture capital means nothing. Nothing means anything beyond human life. And if we are playing around with that, योर जनरेशन विल पे, risks. कर लो अपनी जनरेशन में, ऐश कर लो जो भी है, वो जनरेशन विल पे फॉर इट, जनरेशन विल कम टू पे फॉर। इफ इकोनॉमिक डिवाइड विल इंक्रीज, मेरा एक और वो सेइंग है, अपने घर में कितने भी चौकीदार रख लेना, घर में अगर ब्रेड का टुकड़ा होगा और बाहर अगर 1000 लोग भूखे होंगे, तो आपके घर में घुस करके आपके किचन को तोड़ करके वहाँ से ब्रेड का टुकड़ा लेकर के जाएंगे। ठीक है, यू विल नॉट पे, probably we will not pay, our generation will, if we'll not correct it, our generation will going to pay for this extreme economic divide. और वो भी तो अपने ही है। हाँ, वही तो योर जनरेशन मतलब मैं भी, मतलब कि आपकी जनरेशन, मतलब आई एम गिविंग अ सेल्फिश टोन टू दैट। एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल मैं उसी चीज़ को समराइज कर रही हूँ कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हम निकल जाएंगे, यानी कि अमित तो सोनिया निकल जाएंगे और ये जनरेशन निकल जाएगी, तो जिस जनरेशन पे इफेक्ट होगा वो किसकी है? किसकी है? कल को ज्यादा लोग कैंसर से मरेंगे, और एज ऑफ कैंसर अगर अर्ली हो जाएगी, तो जो वो पेन किसके होगा, लोग होंगे? वो किसको किसके लोग लोग होंगे? बाहर से नहीं आएंगे, वो यही होंगे। और उस वक्त हम शायद उस उम्र में और उस स्थिति में होंगे कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बैठ के उस चीज़ को सिर्फ रो सकते हैं उस वक्त। सो द टाइम टू एक्ट पीपल, जो आप सब लोग जो सुन रहे हैं, अमित की और मेरी, हम सब की दरखास्त ये है कि जो इस बात को सुन रहे हैं, अगर आप एक भी एंगल से अपनी लाइफ में, अपने काम में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो अमित ने जो समय दिया यहाँ पे और जो पूरा समय दे रहे हैं इस EasyGov को बनाने के लिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, बहुत ही बड़ा योगदान हो जाएगा, जो कि मेजर नहीं किया जा सकता। सो विद दैट, अमित, थैंक यू सो मच। Thank you, Sonia, for bringing a part of me out there. Right? So, thank you. If it will help some people to decide or make a decision that will benefit generation to come, our country, this will be wonderful. Thanks. Thank you for this initiative. I hope so too. That is the, आप ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे होते हैं वो बोलते नहीं हैं। So ये इनिशिएटिव वो एक कोशिश है कि शायद मेरी और आपकी बातों से मैं इंस्पायर हुई और बहुत लोग इंस्पायर हों, और लाइक आई सेड, अगर थोड़ा सा भी कुछ हम जाके अपने अंदर परिवर्तन कर सकें, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो आप लेके चल रहे हो, इसमें बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। Agree. Thank you. So thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा and keep doing the great work. And हमारे ऑडियंस आपको और आपके काम के बारे में कहाँ पे टच में रह सकते हैं? एक तो अपना EasyGov का ब्लॉग है, so there we keep on publishing what we are doing for social protection, and even our opinion about various government policies, like universal basic income is good or bad, farm loan waiver, doorstep delivery of government services. So we keep on talking about that many things. So वहाँ पे आप देख सकते हैं। Personally अगर मुझे reach out करना हो, I think Twitter is the best way, right? Drop me a DM, right, or on a LinkedIn, right? So I would love to get in touch with you. Absolutely. So everybody who's listening, here's a humble request. Please hear the conversation. And of course, if you reach this far, you've already heard the conversation, but absolutely open to hear it again, because some things just work out when we hear it again and again. But not just that. कंजूस मत बनिए, इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर आपको कहीं से किसी चीज़ को टच हुआ है, यू डोंट नो दूसरे के लिए वो क्या चीज़ खोल सकता है।
सो द बेस्ट दैट अमित एंड आई आर डूइंग हियर इज, हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप आगे शेयर करिए और लोगों तक ये बदलाव जाने दीजिए, पता चलने दीजिए. एंड लाइक अमित सेड दैट ही इज एब्सोल्युटली ओपन टू बी इन टच विद एवरीबडी. उन्होंने बहुत पहले कॉन्वर्सेशन में यही बताया था कि व्हाट ही इज लर्नड इज टू टॉक टू पीपल, to meet people without an agenda, and I can vouch for it. That's what he does. So if you have an idea, if you have a thought, if you just want to compliment him for what he's doing or want to criticize him for what he's doing, please go all out and reach out to him on Twitter and LinkedIn. And with that, thank you, Amit. Thank you.